Hello everyone, my name is Dr. Sonar Rajpal. Students, today I am going to explain what are acids and its properties. Students, you know what are acids? Acids are those which when dissolved in water it will produce H ions. And you know students, all acids are water soluble. For example, when hydrochloric acid, when HCl, when you put it in water, it will produce H ions and chloride ions. स्टूडेंट्स जितना भी एसिड्स होता है एसिड्स जब हम पानी में डालते हैं इट विल प्रोड्यूस एच आयंस और जो ये एच आयंस होते हैं ना स्टूडेंट्स दे विल कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस. तो स्टूडेंट्स पानी में जो एच आयंस होता है दे विल एग्जिस्ट in water in the form of hydronium ions. This is a very important question you will see in your exams कि एच आयंस पानी में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब एसिड प्रोड्यूस करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. एंड स्टूडेंट्स एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, strong acids and weak acids. And students, strong acids are those acids which completely dissociate in water to give large number of H ions. An example of all the strong acids are mineral acids like sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3 and hydrochloric acids. And students, the properties of the acid are due to its H ions. इनका प्रॉपर्टीज जो एसिड्स का होता है स्टूडेंट्स इट इज़ ड्यू टू इट्स एच आयंस. मोर द एच आयंस मोर इज़ द कोरेसिवनेस एंड डेंजरस. बेटा जितना एच आयंस ज़्यादा होता है उतना एसिड इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी डेंजरस. एंड व्हाट आर वीक एसिड स्टूडेंट्स? वीक एसिड्स आर दोज which can be partially dissociated in water to give less number of H ions. बेटा वीक एसिड जो होता है वो कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो पार्शली डिसोसिएट होता है और इट विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ एच आयंस. एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स द एसिड विच कंटेन कार्बन्स दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड्स. बेटा हम ऐसा बोलते हैं वीक एसिड्स वो होते हैं विच वी कैन ईट because acids are very dangerous, so we can take acid only weak acid, and weak acids are also always carbon containing acids, and these are called as the organic acids. For example, in curd you have lactic acid which is also a carbon containing acids. In lemon we have citric acid, in tamarind we have tartaric acid present, and in tomato oxalic acid is present. And the other example of the weak acid are acetic acid, that is CH3COH, and the carbonic acid which you can see in the cold drinks. So weak acids are less corrosive due to the less number of the H ions it gives in water, students. For example, student, if you have an acetic acid, when you put this acetic acid in water, it will produce this acetate ions and this hydrogen ions. Students, if you see here, there is a sign of equilibrium. Why there is a sign of equilibrium in the weak acid? Because weak acids are always partially dissociated. वो कभी भी completely dissociate नहीं होते स्टूडेंट्स. उसमें कुछ एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है और कुछ पार्ट डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है. दैट्स वाई फॉर द वीक एसिड वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टूडेंट? जितना भी एसिड्स होता है ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एंड ऑल एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल, चाहे वो वीक एसिड्स हों स्टूडेंट्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों. एंड स्टूडेंट्स एसिड ऑलवेज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स which when put it in the water they dissociate in water to give ions, and these ions conduct electricity when electricity is passed through it. तो students हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिड जो होते हैं पानी में आयंस देते हैं जब हम इनको डिजोल्व करते हैं, इसलिए वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम एसिड्स को एक इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं. एंड एसिड्स आर ऑलवेज sour in taste, and these are the chemical properties of acid. Students, when any acid react with metal it will form salt and hydrogen gas is produced. Example is when you have a zinc metal,
If you dip it in the hydrochloric acid, it will react with the hydrochloric acid, it will form zinc chloride and hydrogen gas is produced. तो स्टूडेंट जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। और जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तब भी सॉल्ट बनता है, बट इन दिस केस वाटर इज फॉर्म्ड. For example, if you have a hydrochloric acid HCl, it reacts with the base OH, it will form salt and water. Students, and it is a kind of neutralization reaction which I will explain in my next video whenever I am going to explain about salt. Because students, acid H ions देते हैं, base OH ions देते हैं, they will combine to form water. Is it clear? That's why it is called as the neutralization reaction. Acid base के साथ combine करके हमेशा salt देगा बेटा और water is formed. And you know students, very very important, all acids are deficient in electrons. And you know students, acids are like beggars, they are deficient in electrons. That's why they always combine with the non-metals. Student, जब भी आप कोई भी compound देखते हो acidic, they always have one non-metal element. So that's why non-metal could be the part of acids. जब भी आप कोई भी acid देखो students, उसमें आप एक non-metal element जरूर देखेंगे. For example, HCl, HNO3 and H2SO4. These are the three acids. It's HCl, we have seen chlorine element, there is nitrogen and oxygen, and sulfur and oxygen. All these are non-metals, because non-metals are always rich in electrons, they always gain electrons, which I already explained in my previous video. तो बेटा non-metals बहुत अमीर आदमी होते हैं, इसलिए जो भी acids होता है, acids are always deficient, they always combine with the non-metals. And all non-metal oxides, they are always acidic in nature students. बेटा जितने भी non-metal के oxides होते हैं, like carbon dioxide, they act as an, you can say, acidic in nature, because whenever you put carbon dioxide in water, it will produce carbonic acid, which is acidic in nature. Or students, or whenever any metal carbonate react with acid, it will also form salt, water and carbon dioxide is formed. बेटा जो भी मेटल कार्बोनेट होगा वो एक बेस की तरह एक्ट करता है. बेसिस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. अभी आपको ये याद रखना है, मेटल कार्बोनेट एक बेस होता है और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा and carbon dioxide is produced. You just keep in mind, carbonate means carbon dioxide is produced always as a byproduct, and this carbon dioxide is produced in the form of gas. For example, this sodium carbonate react with hydrochloric acid, it will form sodium chloride, water and carbon dioxide gas is released. And student, likewise, जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब भी सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. बिकॉज स्टूडेंट, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो भी एक बेस की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, वाटर and carbon dioxide gas is released. And you know student, how you come to know that carbon dioxide gas is released? Because if you pass this carbon dioxide gas through lime water, it will turns lime water milky as follows. Because when you just pass this carbon dioxide gas through lime water is calcium hydroxide, it will produce calcium carbonate and water. You know student, this calcium carbonate is an insoluble substance. It is formed in the form of white PPT, which makes the lime water milky. And you know student, if you pass this CO2 gas for a longer duration through the lime water, milkiness disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in solution. Students, जब भी हम बहुत लंबे ड्यूरेशंस के लिए CO2 को पास करते रहते हैं, whatever the product is formed, calcium carbonate and water say, so again the milkiness is disappear, because there is a substance formed, that is a calcium hydrogen carbonate, which is soluble in solution, and due to which it will again transparent. And you know student, the last reaction
of this acid is when the acid react with any metal oxide, it will also form salt and water is formed. Because student, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी एक बेस की तरह एक्ट करेंगे. हम आपको बेसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. यू नीड नॉट वरी. सो हेयर आई जस्ट वांट टू से, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड एक बेस है, तो सॉल्ट इज फॉर्म्ड and water is formed. In this case, hydrochloric acid react with the copper 2 oxide, it will form copper 2 chloride and water is formed. So in conclusion students, I want to say, दुनिया का जितना भी एसिड्स होता है, I can say all acids produce H ions in water, and every acid it will act like an electrolyte because it will furnish ions when dissolved in water and which will conduct electricity when electricity pass through it. Or you can say that acids when dissolved in waters are a good conductor of electricity. And all acid, this is a very important students, that it will be a great help in your class 11th. All acids are deficient in electrons. That's why students, acid जितना भी होता है, they will make compound with non-metals. जितना भी आप एसिड्स देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, बिकॉज एसिड्स आर लाइक beggars, they are deficient in electrons, they can make compound with the electron rich element like non-metals. And the pH of the acids are always less than 7. pH also I will explain in my next videos. If you like my video, please subscribe my channel for more science video, science classes @ Dr. Sonar Rajpal 123. Thank you.